Hello everyone. This question appears in Class 6 NCERT chapter of fraction. This is 10th question of its exercise 7.4. So the question says that in a class A of 25 students, 20 passed in first class. In another class B of 30 students, 24 passed in first class. In which class was a greater fraction of students getting first class? So firstly हमें given है students in class A. So again 25 and students passed in first class in class A is equal to 20. So fraction is equal to total upon first class passed students. So हो जाएगा 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम एंड 5 टाइम. सो फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5 फॉर क्लास बी. स्टूडेंट्स in class B is equal to 30. Students passed in first class in class B. ये हमें गिवन है 24. सो फ्रैक्शन हो जाएगा हमारे पास टोटल स्टूडेंट 30 एंड फर्स्ट क्लास पास स्टूडेंट 24. 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30 इज इक्वल टू 6 4 जा. सो हो जाएगा 4/5. सो यहाँ पर इन बोथ क्लास ए एंड क्लास बी में सेम फ्रैक्शन में फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट पास हुए हैं. सो एन इक्वल फ्रैक्शन of students passed in first class in both classes. Thank you.